Okay. So hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible and visible? So आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गायनेकोलॉजी। इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं गायनी के, इसको हम जस्ट क्विकली रिवाइज करेंगे। आई थिंक अब तो पास आ गया बिल्कुल आपके एग्जाम, और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी होगी ऑब्स गायनी की। सो क्विकली रिवाइज करते हैं टॉपिक्स ऑफ gynecology. So first one is endometriosis. Endometriosis. So most commonly seen in endometriosis, most commonly seen in reproductive age group. Reproductive age group. And endometriosis is estrogen dependent condition. Estrogen dependent condition. So what are the symptoms? What are the symptoms of endometriosis? Most common symptom? Yes, anyone? Most common symptom of endometriosis? Yes, Dr. Bhuvana. Dr. Ditya. Yes. Most common symptom is pain. Pain. Secondary dysmenorrhea. Dysmenorrhea. Patient हमारे पास आएगा with complaint of secondary dysmenorrhea. And second most common symptom of endometriosis, infertility. And the third one, endometrioma, chocolate cyst. And menstrual disturbance. So 4 symptoms of endometriosis. First one, secondary dysmenorrhea, infertility. Third one, endometrioma, called as chocolate cyst. And third one, menstrual disturbance. And most common site of endometriosis, ovaries, then pouch of Douglas, then uterosacral ligaments. So in this image आप देखेंगे ये है chocolate cyst. So ovaries are involved in 30 to 40% cases. Filled with tarry blood. Blood कैसा होगा? Black colored blood. So most commonly involvement किसका होगा endometriosis में? Ovaries का. So next most important क्या है? जब भी आपको clinical questions आएंगे, most important is PV examination. What are the PV findings in case of endometriosis? So first finding is fixed retrograde uterus. Tenderness in pouch of Douglas, adnexal mass due to chocolate cyst, nodules felt in posterior fornix. आपको यहाँ पे 4 points याद रखनी है. First one, retrograde, fixed uterus. Second one, tenderness in the pouch of Douglas. Third one, adnexal mass due to chocolate cyst. And the fourth one, nodules felt in posterior fornix. Normal, what is the normal position of the uterus? Uterus कैसा रहता है? Anteverted.
बट इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कैसे हो जाएगा? रेट्रोवर्टेड, एंटीवर्टेड से रेट्रोवर्टेड मीन्स बैक साइड को हो जाएगा. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीवी एग्जामिनेशन इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस. अब एंडोमेट्रियोसिस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं हम? द फर्स्ट वन इन्वेस्टिगेशन इज TVS, ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी. ट्रांसविजाइनल सोनोग्राफी. यस डॉक्टर बुवाना, आपने सभी आंसर दे दिए. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज लैप्रोस्कोपी. Laparoscopy, and the gold standard is histopathological examination. Gold standard is histopathological examination. अब इसको मैनेज कैसे करेंगे एंडोमेट्रियोसिस को? सो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस? सो ट्रीट करना है अगर तो हमें डिस्मेनोरिया को, देन NSAIDs एंड OCPs. NSAIDs एंड OCPs. जैसे मैंने आपको बताया, एंडोमेट्रियोसिस इज ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन, जिसमें जितना ज्यादा ईस्ट्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. सो टू डिक्रीज ईस्ट्रोजन कौन सी ड्रग्स देंगे हम? फर्स्ट वन प्रोजेस्टेरॉन, किसी भी तरह दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर या फिर इम्प्लेनॉन की तरह दे सकते हैं या फिर टैबलेट फॉर्म में. सेकेंड वन GnRH एनालॉग्स. थर्ड वन लेट्रोजोल. एंड द फोर्थ वन डानाजोल. सो ये 4 ड्रग्स हैं जिससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा. ये तो हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट. टू ट्रीट ओवेरियन सिस्ट. अब ओवेरियन सिस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे? इफ द साइज इज लेस देन 5 सेंटीमीटर, wait and watch. Wait and watch. यहां पे हमें कुछ नहीं करना है. If the size is more than 5 centimeter, then laparoscopic cystectomy. सिस्ट को लैप्रोस्कोपिक निकाल देंगे. जैसे मैंने आपको बताया है, सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? इनफर्टिलिटी. पेशेंट आएगा विद कंप्लेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. इन केस ऑफ माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. इन केस ऑफ सीवियर एंडोमेट्रियोसिस IVF. In case of severe endometriosis, IVF. So ये हुआ endometriosis. And next one is adenomyosis. So what is the meaning of adenomyosis? Endometriosis means presence of endometrial glands and stroma outside the uterine cavity. And adenomyosis means presence of endometrial tissues inside the myometrium. Inside the myometrium. तो यहाँ पे देखेंगे मायोमेट्रियम में स्मॉल सिस्ट फॉर्मेशन हो रखा है. सो दिस इज ए एडिनोमियोसिस. सो दिस मीन्स द केस ऑफ एडिनोमियोसिस. सो एंडोमेट्रियोसिस इज सीन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, बट एडिनोमियोसिस इज सीन इन multiparous women age more than 40 years. Age more than 40 years. And the presentation. What is the presentation of adenomyosis? Presentation of adenomyosis. Anyone? Yes. Presentation, menorrhagia. Then progressive dysmenorrhea. So this is the presentation of adenomyosis. Next one है per abdomen examination. अब हमें per abdomen examination में क्या findings मिलेंगे in case of adenomyosis? Most important क्या है इसमें? uniformly enlarged uterus.
never more than 12 weeks pregnant uterus size, no adnexal mass, and tenderness. And tenderness is called as Helben's sign. Helben's sign. So these are the per abdominal examination in case of adenomyosis. Next one, investigations. First investigation is ultrasound TVS. Ultrasound TVS. इसमें हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? Asymmetrical myometrial thickening with myometrial cyst. हमें इसमें क्या मिलेगा? मायोमेट्रियम में myometrial cyst and fan shaped shadowing. Fan shaped shadowing. ये अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ adenomyosis. Fan shaped. This is a fan shaped shadowing. Investigation of choice. Investigation of choice. First investigation is TVS. Investigation of choice is MRI. MRI. And the gold standard is histopathological examination. And what is the treatment of adenomyosis? Total abdominal hysterectomy. Total abdominal hysterectomy. Okay, clear to all of you? So next one is types of fibroids. Fibroids are the most common benign pelvic tumors in females, originated from myometrial layer of the uterus. So this one is जो बिल्कुल myometrium के अंदर है. This is called as intramural fibroid, most commonly within the myometrium. Within the myometrium. Most common is intramural fibroid. Second one, submucosal. Submucosal. Submucosal means towards the uterine cavity. And third one, subserosal. Subserosal towards the peritoneal cavity. Peritoneal cavity. So three main types of fibroids. First one, most commonly is intramural. Second one, submucosal. And third one, subserosal. And these are pedunculated. These are pedunculated fibroids. Next, what are the symptoms of fibroid? What are the symptoms of fibroid? Mostly fibroids क्या होते हैं? Asymptomatic. Asymptomatic. And the most common symptom is heavy menstrual bleeding. Heavy menstrual bleeding. So जैसे मैंने आपको बताया 3 types of fibroid, submucosal, intramural and subserosal. So submucosal में कौन से symptoms आएंगे? अगर किसी फीमेल को सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे फीमेल में? जैसे मैंने बताया, फर्स्ट सिम्टम इज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मींस एक्सेसिव ब्लीडिंग. Submucosal. And second one, infertility. Infertility. And the third one is recurrent abortion. Recurrent abortion. Recurrent abortion. Intramural. What are the symptoms of intramural fibroids? Yes, anyone? What are the symptoms of intramural fibroids? Pain. Patient will complain of pain. Pain के साथ आएगा patient. And subserosal, if pedunculated, then torsion of the fibroid
बिग साइज, अगर साइज बिग होगा देन प्रेशर सिम्टम्स, देन प्रेशर सिम्टम्स। प्रेशर सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन, अगर तो सिरोजल फाइब्रॉइड है, posterior wall of the uterus, subserosal, constipation. Second one, retention of urine, अगर anteriorly present है, retention of urine. And the third one is increased frequency of urination. अगर तो है anteriorly cervical fibroid, then it will lead to retention of urine. अगर है anterior wall of the uterus, then increased frequency of urination, increased frequency of urination. और infertility क्यों होगी? Because of submucosal, अगर तो यहाँ पे present है cervical या फिर cornual fibroids, cornual fibroids, then it will lead to infertility. Infertility. So these are the symptoms of fibroids. PV examination. What are the PV findings? Asymmetrical enlarged uterus. एडिनोमियोसिस में क्या था? यूनिफॉर्मली enlarged uterus. और इसमें क्या होगा? Asymmetrical enlarged uterus, non-tender. Size can go up till 20 weeks pregnant uterus. एडिनोमियोसिस में क्या था? Size never be more than 12 weeks of pregnant uterus. In case of fibroid, size can go up till 20 weeks pregnant uterus. So these are the PV findings in case of fibroids. Next है management. So what is management of fibroids? So अगर तो medically treatment करें, then drug of choice, drug of choice, GnRH analogs, GnRH analogs. ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस जीएनआरएच एनालॉग्स, ये क्या करेंगे? एक तो फाइब्रॉइड के साइज को कम कर देंगे एंड थोड़ा ब्लीडिंग को भी कम कर देंगे. इफ मेडिकल ट्रीटमेंट इज फेल्ड एंड फर्टिलिटी इज कंसर्न इन केस ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स टाइप 0 एंड टाइप 1, यहाँ पे हम करेंगे स्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी. मायोमेक्टमी. In case of type 2 and subserosal intramural fibroids, laparoscopic myomectomy. Laparoscopic myomectomy. And next one is hysterectomy. कौन से conditions हैं जिसमें हम hysterectomy कर सकते हैं in case of fibroids? Multiparous female, symptomatic, age more than 40 years, with multiple fibroids. Multiparous, symptomatic, age more than 40 years and multiple fibroids. इस कंडीशन में हम कर सकते हैं hysterectomy. Okay. So you can see ये क्या है? Fibroids. Fibroids of white in color. Of white in color. This one is the big fibroid and small fibroids. Small fibroids. Laparoscopically you can see ये भी fibroid है. Subserosal fibroids. Subserosal fibroids. So next one is uterine polyp. Uterine polyp. Uterine polyp में आप देखेंगे red fleshy mass in the uterine cavity. This is called as uterine polyp.
Dr. Bhuvana, red degeneration of fibroid is seen in pregnancy, second trimester. Pregnancy के second trimester में आप क्या देखेंगे? Red degeneration of fibroid. पेशेंट को फीवर होगा, टीएलसी माइल्डली रेज्ड, और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? कंजर्वेटिवली, ओनली कंजर्वेटिवली. सो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूट्राइन पॉलिप? यूट्राइन पॉलिप के प्रेजेंटेशन क्या होगा? इरेगुलर ब्लीडिंग या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में स्पेसिफिकली आपको क्या मिलेगा? फीडर वेसल साइन. फीडर वेसल साइन मीन्स फाइब्रो, जो पॉलिप है इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? वेसल. फीडर वेसल साइन. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज hysteroscopy. Hysteroscopy. And management is hysteroscopic polypectomy. हिस्टेरोस्कोप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड पॉलिप को कट करके रिमूव कर देंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट यूट्राइन पॉलिप. सो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. सो अल्ट्रासाउंड इमेज में यू कैन सी क्लियरली multiple follicles arranged in the periphery of the ovary. Multiple small follicles. Polycystic ovarian syndrome. So number of follicles कितने होंगे? Number of follicles 10 to 12 follicles. Size 2 to 6 mm. Means less than 10 millimeter. थिक स्ट्रोमा. थिक स्ट्रोमा से क्या होगा? इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ ओवरीज. ओवेरियन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. यस, ऑल्सो नोन एज स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम. Stain-Leventhal syndrome. String of pearl appearance. String of pearl appearance. So what are the symptoms of PCOD? 6 main symptoms of PCOD. First one, anovulation. So PCOD is the most common cause of anovulation in young females. And this is the most common endocrine and metabolic disorder in young females. So first symptom is anovulation. Second one, obesity due to insulin resistance. Due to insulin resistance. And third one, hirsutism. Third one is hirsutism due to excessive androgens. Fourth one is oligomenorrhea, then secondary amenorrhea, then infertility. These are the 6 symptoms of PCOD. First one, anovulation. Second one, infertility. Third one, obesity, hirsutism, oligomenorrhea, and secondary amenorrhea. So PCOD को डायग्नोज करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज करते हैं, दैट इज रॉटरडैम क्राइटेरिया. So what is the management in case of PCOD? Management in case of PCOD. Case first, young female with complaint of secondary amenorrhea. So treatment of choice क्या रहेगा यहाँ पे? Young female with complaint of secondary amenorrhea. Yes, anyone? Drug of choice? No, Dr. FM, FH, okay. So first step क्या रहेगा in case of PCOD? Life modification. Life modification
इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे मेटफॉर्मिन इन केस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट। बट अगर आपके पास कोई फीमेल आ रही है विद कंप्लेंट ऑफ एमिनोरिया, देन कैसे ट्रीट करेंगे? ड्रग, कौन सी ड्रग स्टार्ट करेंगे? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, ये तो एडवाइस करेंगे पेशेंट को। पर साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए क्या स्टार्ट करेंगे? ओसीपीज। ओसीपीज साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए ओसीपीज। इन केस ऑफ हिर्सुटिज्म, पेशेंट विथ सेकेंडरी एमेनोरिया with moderate to severe hirsutism, then OCPs with fourth generation progesterone. First line drug is cyproterone. First line drug is cyproterone. Then if no effect, कोई effect नहीं आ रहा है till 6 months, then you can start spironolactone. Second line drug in case of hirsutism, moderate to severe hirsutism. थर्ड केस है आपके पास, इफ इनफर्टिलिटी इज कंसर्न, मीन्स फीमेल वांट्स टू कंसीव, देन इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इंडक्शन, ओव्यूलेशन इंडक्शन। सो कौन सी ड्रग्स यूज होंगी फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन? Yes, Dr. Bhuvana, letrozole. So first drug is tablet letrozole. Tablet letrozole. And the second drug is clomiphene citrate. Clomiphene citrate for induction of ovulation. And what is the most common side effect of clomiphene citrate? Most common side effect of clomiphene citrate? Chances of multiple pregnancies are only 6 to 8%. Yes, yes, Dr. Bhuvana, hot flashes. Hot flashes. Most common side effect of clomiphene citrate. So next important point is hormonal changes in PCOD. PCOD में hormonal changes कैसे रहेंगी? Yes, testosterone will be raised, serum androstenedione raised, LH raised, AMH anti-Mullerian hormone. So anti-Mullerian hormone बढ़ेगा या कम होगा? Anti-Mullerian hormone it will be in increasing order. AMH होता क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। कहां से प्रोड्यूस होगा? ग्रेनुलोसर सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स, एंट्रल फॉलिकल्स एंड स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स जितने भी हैं। तो इसमें होता क्या है पीसीओडी में? मल्टीपल फॉलिकल्स, जितने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे उतना ज्यादा एएमएच बढ़ता जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लो, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लो। ओके, ईस्ट्रोजन इन थिन पेशेंट्स, जरूरी नहीं है कि पीसीओडी का पेशेंट है वो ओबीज ही होगा, थिन भी हो सकता है, विल बी नॉर्मल। नॉर्मल इन ओबीज, ओबीज में क्या होगा? एंड्रोजन्स कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन। कौन से ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोन, ईस्ट्रोन, E1 ईस्ट्रोन। So in thin females, estrogen will be normal, but in case of obese females, estrogen will be raised. Yes, Dr. Bhavana, ovarian reserve के लिए best test to check
is AMH, anti-Mullerian hormone. So drug used for ovulation stimulation during IVF. जैसे मैंने आपको बताया फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इज लेट्रोजोल एंड क्रोमिफेन सिट्रेट, बट ड्यूरिंग आईवीएफ हम कौन सा ड्रग यूज करेंगे? इंजेक्शन HMG, ह्यूमन मेनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन, एंड ओव्यूलेशन ट्रिगर के लिए इंजेक्शन HCG. So this one is the ultrasound picture of ultrasound image of, yes, anyone? Ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS, due to injection ovarian hyperstimulation syndrome because of injection HMG. Trigger is injection HCG. अल्ट्रासाउंड टीवीएस में आप क्या देखेंगे? मल्टीपल फॉलिकल सिस्ट प्लस ascites. Patient will complain of pain abdomen and vomitings. Pain abdomen and vomitings in case of OHSS. So next topic is sequence of puberty in females. Sequence of puberty in females. So what is the pubertal age in females? Pubertal age. Females में? Yes, anyone? Pubertal age? 10.5 years. 10.5 years. And the first sign of puberty in females? First sign of puberty in females. Growth spurt. First sign on puberty in females. Second one, breast budding is called as thelarche. And this one is the first visible sign. First visible sign of puberty in females. First visible and first specific sign in females is thelarche. First sign is growth spurt. Pubarche means appearance of pubic and axillary hair. Then peak height velocity. And the last one is menarche. So growth spurt, breast budding, thelarche, appearance of pubic and axillary hair, pubarche. Then peak height velocity. And the last one is menarche. So what is the age of menarche in females? Average age of menarche in females. Twelve and half years. 12.5 years. Yes, Dr. Pasam, 12.5 years in females. So next one is, what is the meaning of precocious puberty? Precocious puberty. If the puberty occurs at before 8 years, before 8 years, and the most common cause is idiopathic. Most common cause is idiopathic and drug of choice. So what is the drug of choice in case of precocious puberty? Drug of choice? Continuous GnRH. Okay. So next one is delayed puberty. So what is the meaning of delayed puberty? If puberty doesn't occur till 13 years, till 13 years of age, most common cause is constitutional delay या फिर Kallmann syndrome.
या फिर कैलमैन सिंड्रोम। और ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? पल्सिटाइल GnRH, pulsatile GnRH. So at the time of puberty, activation of hypothalamic-pituitary ovarian axis, HPO axis क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी. So hypothalamus will release GnRH in a pulsatile manner. It will act upon anterior pituitary. Anterior pituitary क्या रिलीज करेगा? FSH and LH. FSH and LH. ओवरीज में ग्रैनुलोसा सेल्स क्या इंक्रीज करेंगे? ईस्ट्रोजन. एंड आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होगा? प्रोजेस्टेरॉन. बोथ हार्मोन विल एक्ट अपॉन यूट्रस. दोनों ही हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे यूट्रस. ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर proliferation of endometrium and progesterone is responsible for stabilization of the endometrium. So this one is the HPO axis. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. At the time of ovulation, time between LH surge and ovulation, time between LH peak and ovulation, and estrogen peak and LH peak. So LH surge means जब से LH बढ़ना शुरू हुआ, तो LH surge से ovulation का टाइम पीरियड कितना है? 32 to 36 hours. मीन्स LH सर्च से ओव्यूलेशन कब होगा? 32 to 36 hours. LH peak, this one is the LH peak. So LH peak से ओव्यूलेशन 10 to 12 hours. ईस्ट्रोजन पीक से LH पीक टाइम इंटरवल कितना रहेगा यहाँ पे? 14 to 24 hours. 14 to 24 hours. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. LH सर्च टू ओव्यूलेशन कब होगा? 32 to 36 hours. LH पीक से ओव्यूलेशन 10 to 12 hours. एंड ईस्ट्रोजन पीक टू LH पीक के बीच का टाइम इंटरवल कितना रहेगा? 14 to 24 hours. And which hormone is responsible for LH peak? Which hormone is responsible for LH peak? Estrogen. Estrogen is responsible for LH peak. So next one is menopause. So what is the pathophysiology of menopause? Pathophysiology of menopause. Menopause means permanent cessation of menstruation. Okay, so इसमें होगा क्या? ओवेरियन एक्टिविटी, लो ओवेरियन एक्टिविटी मीन्स ओवेरियन फेलियर. अब मोस्ट कॉमन एज क्या होगी? इन इंडिया इज 47 years मेनोपॉजल एज. वर्ल्ड वाइड इज 51 years of age. 51 years of age. So low activity of ovaries, ovarian failure, no folliculars are present. देखो ओवरीज ही फेल हो गई है यहाँ पे, यहाँ पे कोई फॉलिकल नहीं है. देन नो ग्रेनुलोसा सेल्स, नो थिका सेल्स एंड नो प्रोजेस्टेरॉन. अगर ग्रेनुलोसा सेल्स नहीं है देन ईस्ट्रोजन विल बी लो, लेस देन 20 पिकोग्राम. अब नेगेटिव फीडबैक हट गया एफएसएच से. सो एफएसएच विल बी मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट. नो थिका सेल्स मीन्स लेस एंड्रोजन्स.
loss of libido. No progesterone because no granulosa cells, no Elder surge, no ovulation. Due to anovulation, secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea. So this one is the pathophysiology of menopause. And what are the symptoms and treatment of menopause? Most common symptom of menopause is hot flashes. Most common symptom is hot flashes. So first line treatment is hormonal replacement therapy. Hormonal replacement therapy. And the second line is Tibolon. First line is HRT. Second line is Tibolon. In case of osteoporosis, raloxifene, calcitonin, and teriparatide. So these are the drugs used in case of osteoporosis to prevent osteoporosis. If already, अगर female को already ही osteoporosis है, then drug of choice is bisphosphonates. Bisphosphonates. So in case of vaginal dryness, estrogen cream, Premarin. Estrogen cream, that is Premarin. So hormone replacement therapy, if the uterus is present, what are the conditions? कौन से conditions में हमें estrogen and progesterone देना है? कौन से condition में हमें सिर्फ estrogen देना है? If the uterus is present, then low dose of estrogen plus progesterone. If uterus is absent, means post hysterectomy patient, then we can give only estrogen. So if the uterus is present, देखो जो भी symptoms हैं मेनोपॉज में, हॉट फ्लैशेस हो गए, ऑस्टियोपोरोसिस हो गए, होंगे बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन. बट यहाँ पे हम प्रोजेस्टेरोन क्यों देंगे? क्योंकि अगर हम अकेले ईस्ट्रोजन देते रहे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड रिस्क ऑफ सीए एंडोमेट्रियम. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम हम ऐड करेंगे प्रोजेस्टेरोन. बट इन केस ऑफ हिस्टेरेक्टमी देन वी कैन गिव estrogen alone. Special conditions for HRT. What are the special conditions for HRT? First, in case of gonadal dysgenesis, premature menopause, or in case of ovary removed or destroyed, या फिर radiation से ovaries destroy हो गई हैं. So these are the conditions. Number 1, gonadal dysgenesis. Number 2, premature menopause. And number 3, ovary removed or destroyed. इन conditions में हमें HRT देना ही देना है. तो नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी एमेनोरिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी एमेनोरिया. सो केस 1, आपके पास पेशेंट आता है विद प्राइमरी एमेनोरिया विद कंप्लेंट ऑफ साइक्लिक एब्डोमिनल पेन. ऑन एग्जामिनेशन, यूट्रस इज प्रेजेंट, breast development is present, pubic and axillary hair present, and FSH and LH is normal. Then means all hormones are normal. Then most common cause क्या हो सकता है? Most common cause होगा यहाँ पे imperforated hymen. Means this is a case of cryptomenorrhea, hidden menstruation because of imperforated hymen. यहाँ पे आप देखेंगे on local examination, tensed bluish bulging hymen, tensed
bluish bulging hymen. And what are the complications? Hematometra, hematocolpus, and endometriosis. Hematometra means because of obstruction in the outflow. Outflow obstruction से क्या होगा? Hematometra, collection of blood in the uterus, या फिर hematocolpus, collection of blood in the vagina, या फिर endometriosis. Endometriosis क्यों होगा? Because of retrograde menstruation. Retrograde menstruation. And what is the management of imperforated hymen? Cruciate incision. Cruciate incision. And the other cause, और कौन से cause हो सकते हैं क्रिप्टोमेनोरिया के? Transvaginal transverse vaginal septum. Transverse vaginal septum. ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में जब भी हम एग्जामिनेशन करेंगे हमें जो वेजाइनल ओपनिंग मिलेगी वो मिलेगी नॉर्मल, बट इन केस ऑफ इनपरफोरेटेड हाइमन हमें हाइमन कैसे मिलेगा? टेंस्ड ब्लूइश बल्जिंग हाइमन. अगर आपको क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं प्राइमरी एमेनोरिया विद यूट्रस इज एब्सेंट, तो आपके माइंड में दो ही डायग्नोसिस आने चाहिए, दो ही पॉइंट्स आने चाहिए कि यूट्रस इज एब्सेंट इन मुलेरियन एजेनेसिस एंड इन केस ऑफ AIS. सो मुलेरियन एजेनेसिस एंड AIS, ये दोनों ही कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें आपको मिलेगा एब्सेंट यूट्रस. So in case 1, primary amenorrhea with uterus absent, well-developed breast and pubic hair. तो आपका डायग्नोसिस होना चाहिए मुलेरियन एजेनेसिस, absence of mullerian duct. जीनोटाइप क्या होगा? 46XX and gonads, ovaries. So ovaries produce करेंगी estrogen and estrogen is responsible for development of breast. So first diagnosis, Mullerian agenesis. If the well-developed breast is present but pubic hair not well-developed, तो यहाँ पे आपका diagnosis आना चाहिए androgen insensitivity syndrome. Genotype 46XY, gonads. AIS में गोनैड्स क्या होंगे? इन केस ऑफ AIS, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, गोनैड्स इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस. एंड दीज, इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी? insensitive to testosterone. मीन टेस्टोस्टेरोन तो होगा लेकिन जो मेल है वो होगा insensitive to testosterone. So diagnosis AIS. And treatment इसमें क्या करेंगे? Bilateral gonadectomy at 16 to 18 years of age. तो ये हुआ केस सेकेंड. इन केस थर्ड, primary amenorrhea with uterus is present. Primary amenorrhea, uterus is present and absent breast. Then absent breast. So इस कंडीशन में आपको पॉइंट याद रखने हैं FSH. आप चेक करेंगे FSH levels. If the FSH levels are low, then diagnose क्या होगा? Kallmann syndrome या फिर rule out CNS tumors. If the FSH is low. But in case of primary amenorrhea, if the uterus is present and breast absent and FSH is high, if the FSH is high, then cause क्या रहेगा? gonadal dysgenesis.
dysgenesis. Clear to all of you? Uterus absent दो conditions में होगा in case of Mullerian agenesis and in case of AIS, androgen insensitivity syndrome. But if the uterus is present and the breast is absent, breast absent है, uterus present है, FSH is low. If the FSH is low, then Kallmann syndrome या फिर CNS tumors. But if the FSH is high, then gonadal dysgenesis. gonadal dysgenesis. इसमें भी हम चेक करेंगे शॉर्ट स्ट्रेचर है या फिर नॉर्मल. अगर तो क्वेश्चन में आता है शॉर्ट स्ट्रेचर, देन डायग्नोसिस क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम. 45XO gonads are streak ovaries. Streak ovaries. But if the stretcher is normal, then diagnosis क्या होगा? Swier's syndrome. Genotype 46XY. Gonads are streak testis. Streak testis. So please इसको माइंड में रखना. If the FSH is high, आपके माइंड में आना चाहिए gonadal dysgenesis. Okay. gonadal dysgenesis क्यों? बिकॉज अगर गोनाड्स ही नहीं वर्क कर रहे हैं तो ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा. ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन नहीं होगा तो नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच क्या हो जाएगा? कट जाएगा, जिससे एफएसएच क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. सो शॉर्ट स्ट्रेचर है तो टर्नर सिंड्रोम. इफ द नॉर्मल है, हाइट इज नॉर्मल, देन स्वीयर सिंड्रोम और यस कैलमैन सिंड्रोम या फिर कैलमैन सिंड्रोम. तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी amenorrhea. Second one is secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea. So most common cause of secondary amenorrhea. So what is the most common cause? Yes, pregnancy. Pregnancy is the most common cause of secondary amenorrhea. And what is the most common pathological cause of secondary amenorrhea? Yes, Dr. FH. PCOD. PCOD is the most common pathological cause of secondary amenorrhea. So step by step देखते हैं causes of secondary amenorrhea. Hypothalamic cause. What are the hypothalamic cause of secondary amenorrhea? Anyone answer देंगे इसका? Hypothalamic cause of secondary amenorrhea. Stress, anxiety, excessive weight loss, excessive exercise. These are the causes of hypothalamic cause of secondary amenorrhea. So second one, pituitary cause. Pituitary cause में क्या आएगा हमारे पास? First one, prolactinoma, and the second one is Sheehan syndrome. Sheehan syndrome. So prolactinoma means prolactin secreting pituitary tumors. पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो जाएंगे और ये क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक टू GnRH, जिससे क्या होगा? लो LH एंड FSH. लो LH एंड FSH. सो इन केस ऑफ प्रोलैक्टिनोमा हमें हॉर्मोन्स FH और LH क्या मिलेंगे? लो. पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ हेडेक, visual disturbance. Headache and visual disturbance. And drug of choice is cabergoline. Cabergoline is the drug of choice in case of prolactinoma. Yes, Dr. FS, galactorrhea, amenorrhea, infertility. These are the additional findings in case of prolactinoma. So second one is Sheehan syndrome. So in case of Sheehan syndrome, due to postpartum hemorrhage, necrosis of anterior pituitary. So anterior pituitary से जो भी hormones हैं वो सारे हो जाएंगे low. So FSH भी low, LH भी low, prolactin, ACTH सभी fall कर जाएंगे. History of postpartum hemorrhage, complaint of
lactational failure and cold intolerance, and secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea. So these are the pituitary cause of secondary amenorrhea. First one is prolactinomas and the second one is Sheehan syndrome. Sheehan syndrome. Ovarian cause में premature ovarian failure and PCOS. PCOS. Yes, treatment of choice. Yes, Dr. FH. ट्रीटमेंट शेहान सिंड्रोम में क्या देंगे? लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंटेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स. सो नेक्स्ट वन है ओवेरियन कॉज. ओवेरियन कॉज में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या फिर पीसीओएस. पीसीओएस. सो इन केस ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर नो फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ओवरी. तो फॉलिकल्स नहीं है, देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होंगे? लो. FSH and LH high. FSH and LH high. PCOS, anovulation, estrogen FSH normal, progesterone and low, LH क्या होगा? Raised. So complaint of hirsutism, obesity, secondary amenorrhea, oligomenorrhea. Oligomenorrhea. And the last one is यूट्राइन कॉज. यूट्राइन कॉज में हमारे पास एशरमैन सिंड्रोम. एशरमैन सिंड्रोम. इसमें होता क्या है? इंट्रा यूट्राइन एडिशंस. इंट्रा यूट्राइन एडिशंस. LH विल बी नॉर्मल, FSH भी नॉर्मल एंड ईस्ट्रोजन भी यहाँ पे है नॉर्मल. हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम क्यूरिटाज एंड ट्यूबरक्लोसिस. मीन्स बेसिकली होता क्या है एशरमैन सिंड्रोम में? डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम. सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस वन इज द पिट्यूटरी कॉज. प्रोलैक्टिनोमा एंड शीहान सिंड्रोम, पिट्यूटरी कॉज ऑफ secondary amenorrhea. Premature ovarian failure and PCOS, ovarian cause of secondary amenorrhea. And the last one is Asherman syndrome, uterine cause of secondary amenorrhea. Uterine cause of secondary amenorrhea. So अभी देखते हैं Asherman syndrome. So Asherman syndrome most common cause जैसे मैंने आपको बताया excessive curettage. Excessive curettage. Problem, destruction of basal layer of endometrium. Destruction of basal layer of endometrium. Presentation. So what is the presentation of Asherman syndrome? What is the presentation of Asherman syndrome? No, Dr. Bhavana, oligomenorrhea क्यों होगा Asherman syndrome में? Destruction of endometrial layer. Yes, hypomenorrhea. So hypomenorrhea, scanty menstruation, then secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea means पहले धीरे धीरे periods कम होने शुरू होंगे, then absence of menstruation, then infertility. So hypomenorrhea, secondary amenorrhea and infertility. No, इसमें dysmenorrhea, painful dysmenorrhea, no, इसमें नहीं होगा. So आपको 3 points याद रखनी है. First one is hypomenorrhea, secondary amenorrhea, and the third one is infertility. So what is the investigation? Investigation कौन सी कराएंगे? Hysterosalpingography and hysteroscopy. Treatment of choice, hysteroscopic adhesiolysis. मीन यहां से हम इंसर्ट करेंगे स्टेरोस्कोप और जितनी भी एडिशंस हैं इनको हम कर देंगे कट. एडिशंस को हम कट कर देंगे. देन वी विल स्टार्ट estrogen and progesterone therapy, HRT therapy.
HRT therapy for 3 months. For 3 months. So this is all about Asherman syndrome. On histosalpingography, hysterosalpingography, आप देखेंगे multiple filling defects. So these are the small black dots. Multiple filling defects are seen in case of Asherman syndrome. In case of Asherman syndrome. तो ये हुआ secondary amenorrhea. Next one, investigations. जब भी आपके पास पेशेंट आएगा सेकेंडरी एमेनोरिया का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी. फर्स्ट आप चेक करेंगे यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, देन सीरम टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन. सीरम टीएसएच एंड प्रोलैक्टिन. अगर ये आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं नॉर्मल, if the reports are normal, then progesterone challenge test. Progesterone challenge test. Progesterone challenge test में हम टैबलेट देंगे पेशेंट को मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिडेट 10 milligram BD डोज मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 7 to 10 days. इसके बाद हम कर देंगे स्टॉप. 7 to 10 days then stop. जैसे आपको पता है कि जैसे प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा, विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन. इफ द ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, इफ द ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, इट मींस ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज नॉर्मल. इस फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज नॉर्मल. HPO एक्सिस इज फंक्शनिंग नॉर्मल. एंडोमेट्रियम इज नॉर्मल. मींस यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या है? ईस्ट्रोजन. या फिर डेफिशिएंट क्या है? ईस्ट्रोजन. सॉरी, यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या है? प्रोजेस्टेरॉन. मींस यहाँ पे है ईस्ट्रोजन प्रेजेंट. ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है तभी तो विड्रॉल ब्लीडिंग हुआ प्रोजेस्टेरॉन से. सो कॉज क्या रहेगा? एन ओव्यूलेशन इज द कॉज. सो एन ओव्यूलेशन इज सीन इन PCOS. PCOS. So if the bleeding is present, then cause will be PCOS. But अगर bleeding नहीं होता है, then if the bleeding is absent, if the bleeding is absent, then estrogen is deficient. या फिर endometrial is defective, defective या scarred. If bleeding is negative, then next step will be estrogen and progesterone challenge test. 21 days estrogen, then 10 days progesterone. Okay. If the bleeding is present, it means यहाँ पे है estrogen deficiency. If the bleeding is present, it means estrogen deficiency. Then हम check करेंगे FSH levels. Check FSH levels. If the levels are high, if the levels are high, then diagnosis क्या होगा? If the levels are high. Yes, anyone? If the levels are high, diagnosis? कौन सी कंडीशन में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होगी? Yes, yes. Dr. FH, ovarian failure. If the FSH is raised, it means premature ovarian failure. Premature ovarian failure. If the FSH is low, then if the FSH is low, CNS tumors, Sheehan syndrome, hypothalamic cause, hypothalamic cause. बट इफ द ब्लीडिंग इज नेगेटिव, हमने ईस्ट्रोजन भी दिया, प्रोजेस्टेरोन भी दिया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं हुआ, देन
एशरमैन सिंड्रोम, एशरमैन सिंड्रोम। तो ये हुआ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन चैलेंज टेस्ट. In case of progesterone challenge test, if the bleeding is present, it means it's a case of PCOD. If the bleeding is negative, then we will give estrogen and progesterone. अगर bleeding होती है, then we will check for FSH. If the FSH is high, premature ovarian failure. If the FSH is low, then CNS tumors, Sheehan syndrome, and hypothalamic cause. If the bleeding is still negative, then cause will be Asherman syndrome. Asherman syndrome. So this is all about amenorrhea. Amenorrhea. So next step है infertility. So next topic is infertility. Infertility. So what are the basic valuations for infertile couples? जब भी कोई infertile couple आपके पास आएगा तो basic valuations क्या होंगी? First one is husband's semen analysis. Second one, test for ovulation. Third one, test for tubal patency. कैसे करेंगे? HSG, hysterosalpingography. At least one ultrasound, TVS. One ultrasound, TVS. तो these are the basic test. जो basic test जहां से हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे. Husband semen analysis, test for ovulation, test for tubal patency, at least ultrasound TVS. Ultrasound TVS. So next देखते हैं टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन कौन कौन से हैं. टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन. सो देखो, इफ अगर तो ओव्यूलेशन हुआ है, इट मींस प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट. प्रोजेस्टेरॉन है फीमेल की बॉडी में. अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ, इट मींस नो प्रोजेस्टेरॉन. इट मींस नो प्रोजेस्टेरॉन. हम यहाँ पे चेक क्या करते हैं ओव्यूलेशन टेस्ट में? प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन है या फिर नहीं है. So first test is serum progesterone on day 21 and 22. Serum progesterone day 21 and 22. Second one, cervical mucus changes. अगर mucus thin है, means estrogen is present. If mucus is thick, means progesterone. Third one, basal body temperature. ओवुलेशन के बाद क्या होगा? 0.5 फारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज ए थर्मोजेनिक. बेसल बॉडी टेम्परेचर. फोर्थ वन, विजाइनल एपिथेलियल स्टडी. एंड द फिफ्थ वन इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी. एंडोमेट्रियल बायोप्सी. सो टेस्ट फॉर ओवुलेशन, serum progesterone on day 21 and 22, cervical mucus study, basal body temperature, vaginal epithelial study, and endometrial biopsy. So what are the tests which can predict ovulation? वो कौन से टेस्ट हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि ओवुलेशन हुआ है? मेन सो इसमें है यूरिनरी एलएच सर्च. यूरिनरी एलएच सर्च चेक करने के लिए किट आती है मिड साइकिल में. जिस तरह प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं हम, 2 लाइंस आती हैं, वैसे ही मिड साइकिल अगर आप चेक करेंगे, 2 लाइंस अगर प्रेजेंट है, इट मींस ओवुलेशन हो जाएगा आफ्टर 24 आवर्स. एंड द सेकंड वन इज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, डे 10 ऑफ साइकिल. हम फॉलिकल्स को मॉनिटर करते जाएंगे, धीरे धीरे फॉलिकल ग्रो करेगा, ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्मेशन हो जाएगा. देन आफ्टर ओवुलेशन में क्या मिलेगा? जो फॉलिकल होगा वो हो जाएगा श्रिंक. सो ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. सो दीज आर द टेस्ट फॉर ओवुलेशन. नेक्स्ट वन, ओवेरियन रिजर्व टेस्ट. सो व्हाट आर ओवेरियन रिजर्व टेस्ट? Ovarian reserve test means हम चेक करेंगे whether follicles are present in the ovary or not, कि follicles ovary में है या फिर नहीं है.
सो इसमें हम चेक करते हैं डे 3 सीरम इनिबिन, जो हमारे पास आएगा लो इन केस ऑफ पुअर रिजर्व. डे 3 FSH raised. Day 3 antral follicle count if less than 4 follicles means poor reserve. Serum AMH if less than, normal value is 1 to 3 nanogram. If less than 1, it means poor reserve. So ovarian reserve test में serum inhibin day 3 serum FSH, anti-Mullerian hormone. This one is the best test to check ovarian reserve, and day 3 antral follicle count. AMH, yes डॉक्टर भुवाना, AMH हम कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम. लो मीन्स लो रिजर्व, जितना लो आएगा उतना पुअर रिजर्व. सो AMH होता क्या है? AMH is secreted from granulosa cells of small antral follicles and pre-antral follicles. पुअर रिजर्व. तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को, अगर पेशेंट प्रेगनेंसी चाहता है, इफ शी वांट्स टू कंसीव, तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? यस एनीवन? इन केस ऑफ पुअर रिजर्व, जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ओवेरियन रिजर्व पुअर होता जाएगा. सो मैनेजमेंट कैसे मैनेज करेंगे? IVF, yes, IVF with donor egg. IVF with donor egg. Okay, so next one, most important parameters of semen analysis. Most important is morphology, then motility, then concentration, So morphology should be 4%, motility 30%, and concentration more than 15 million per ml. Important parameters of semen analysis. Investigations in case of azoospermia and severe oligospermia. So जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा विद एजोस्पर्मिया या फिर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, हम टेस्ट क्या करेंगे? FSH एंड टेस्टोस्टेरोन. FSH and testosterone. If the FSH is high and the testosterone is low, it means, so what is the cause? यहाँ पे cause क्या हुआ एजोस्पर्मिया का? If the FSH is high and the testosterone is low, yes, testicular failure, gonadal failure, gonadal failure. If the both FSH and testosterone both are low, then अगर दोनों ही कम है, then cause hypothalamic-pituitary cause. Pituitary cause. If both hormones are normal, then obstruction. Yes, obstruction. So FSH high, testosterone low means gonadal failure. FSH and testosterone दोनों ही कम है, it means hypothalamic pituitary cause. If the FSH and testosterone both are normal, then cause क्या होगा यहाँ पे? Obstruction. So next important topic है vaginitis. 3 types: bacterial vaginosis, trichomonas vaginalis, and candidiasis. So discharge in case of bacterial vaginosis, discharge कैसा मिलेगा? Thin grayish white foul smelling discharge in case of bacterial vaginosis. Trichomonas vaginalis में
frothy greenish discharge with pruritus, means with itching. Patient will complain of itching. In case of candidiasis, curdy white discharge with intense pruritus. बहुत ज्यादा पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि बहुत ज्यादा itching हो रही है. Okay, so in case of bacterial vaginosis, thin grayish white, foul smelling discharge. In case of trichomonas vaginalis, frothy green with pruritus. In case of candidiasis, curdy white discharge with intense pruritus. pH more than 4.5 and more than 4.5. But in case of candidiasis, less than 4.5. Mean यहाँ पे क्या होगा? pH alkaline. And in case of candidiasis, fungal can grow in acidic medium. Investigation of choice, तीनों में ही saline microscopy. Gold standard in case of bacterial vaginosis, gram staining. In case of bacterial vaginosis, trichomonas and fungal vaginitis में culture. Okay, so microscopic examination में clue cells are seen in bacterial vaginosis. Whiff test positive. और क्राइटेरिया ये यूज करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए, वो है एम्सेल्स क्राइटेरिया. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इन केस ऑफ ट्राइकोमोनास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, और इन केस ऑफ कैंडिडियासिस फंगल हाइफे, प्रेजेंस ऑफ फंगल हाइफे. Treatment of choice in case of bacterial vaginosis, metronidazole. Trichomonas, metronidazole plus partner treatment. In case of candidiasis, fluconazole. In case of candidiasis, fluconazole. Yes, AMSEL criteria में 4 points होते हैं. First one is whitish discharge. Okay. Second one, whiff test positive. Third one, clue cells present, and the fourth one, pH more than 4.5, alkaline in nature. So these are the clue cells which are seen in bacterial vaginosis. Clue cells seen in bacterial vaginosis, and strawberry cervix is seen in bacterial vaginosis or trichomonas vaginalis. Yes, trichomonas vaginalis. Strawberry cervix is seen in trichomonas vaginalis. Next one है genitourinary fistulas. Fistulas क्या होते हैं? What are fistulas? Abnormal communication between urinary and genital tract. किसी भी दो तरह के एपिथेलियल में अगर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं फिस्टुला. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ genitourinary fistula? So this one is the urinary bladder, ureter, urethra and vagina. अगर तो है फिस्टुला यूरेटर एंड विजाइना के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज uretrovaginal fistula. Second one, bladder and vagina, called as vesicovaginal fistula. And the third one, if urethra and vagina के बीच में, called as uretrovaginal fistula. 3 types of fistulas: uterovaginal, vesicovaginal and uretrovaginal fistulas. So in case of VVF, vesicovaginal fistula, most common symptom is constant dribbling of urine from vagina. And what are the causes of VVS in developed country and developing country?
So what is the cause of VVF? Yes, anyone? Cause of VVF? Yes, Dr. Bhuvana, obstructed labor. Obstructed labor in India. Most common cause of VVF in India. Yes. And in developed countries, cause of VVF? Surgeries. Yes. Hysterectomy. Hysterectomy is the most common cause of VVF in developed countries. Time of repair. अगर तो है ड्यू टू obstructed labor, then after 6 weeks. 6 weeks. Due to surgery within 24 hours, then immediate repair of the fistula. Due to radiotherapy, then wait for 12 months. Then wait for 12 months. सभी में different timings है. Due to obstructed labor, wait for 6 weeks. 6 weeks के बाद हम repair करेंगे. Doctor, obstructed labor. Obstructed labor means despite of good uterine contractions. Uterine contractions बहुत अच्छी हैं, फिर भी labor progress नहीं कर रही है. That is called as obstructed labor. Obstructed labor. तो इसका cause क्या हो सकता है? Malpresentation, malposition and neglected CPD. Neglected CPD. तो फिस्टुलास में यही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया? Hyperplasia means excessive growth of cells. So endometrial hyperplasia means excessive proliferation of endometrium. So clinical presentation क्या होगा? Abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding. Abnormal uterine bleeding. So most common presentation in case of endometrial hyperplasia is abnormal uterine bleeding. First investigation, ultrasound, TVS, transvaginal sonography. Okay, transvaginal sonography में हम चेक करेंगे endometrial thickness. Endometrial thickness. If the thickness is more than 12 millimeter in case of premenopausal female, or postmenopausal में if more than equal to 5 millimeter, then investigation of choice endometrial biopsy. Endometrial biopsy. ओके कोई भी पेशेंट आती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ विद कंप्लेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड टीवीएस. इन प्रीमेनोपॉजल इफ द थिकनेस इज मोर देन 12 mm, in postmenopausal if the thickness is more than 5 mm, then investigation of choice will be endometrial biopsy. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में या तो हमारे पास आएगा विदाउट एटिपिकल सेल्स या फिर विथ एटिपिकल सेल्स. विदाउट एटिपिकल एंड विथ एटिपिकल. एटिपिकल सेल्स मीन्स एबनॉर्मल सेल्स. एबनॉर्मल सेल्स. Without, what is the treatment in case of without atypical cells? क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को यहाँ पे? Without atypical cells, progesterone. 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 With atypical cells, atypia means abnormal cells, abnormal growth of the cells. With atypical cells, do total abdominal hysterectomy. जहां पे atypical cells आगे means risk of carcinoma, risk of CA endometrial carcinoma. तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. विदाउट एटिपिकल सेल्स यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे प्रोजेस्टेरॉन. क्लियर?
So next, postmenopausal female with bleeding. Postmenopausal female with bleeding, endometrial thickness is less than 4 mm. Postmenopausal female with bleeding, endometrial thickness is 4 mm, less than 4 mm. तो यहाँ पे कॉज क्या होगा? Yes, atrophic endometritis, senile endometritis. तो अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है विद कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज लेस देन 4 mm, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस या फिर सिनाइल एंडोमेट्राइटिस. सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस. सो अभी ब्रेक लेते हैं फॉर 15 minutes, देन विल स्टार्ट एट 9:40. 9:40.
सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, CA सर्विक्स, CINN, CA सर्विक्स. So what is the most common causative agent of CA cervix? Most common. HPV 16 and HPV 18. HPV 16 and HPV 18. DNA virus. Human papilloma DNA virus. So if the pap smear report, if the pap smear report is abnormal, अगर तो हमारे पास आती है pap smear report abnormal, then next step will be biopsy. Abnormal, then next step biopsy. Next step क्या होगा? Biopsy. If the lesions are visible, then punch biopsy. Then punch biopsy. If the lesions are not visible, then in case of resource rich area, colposcopy. In case of resource poor area, via and you can do via and villi. Visual inspection with acetic acid and visual inspection with Rigol iodine. Via and villi. CIN means cervical intraepithelial neoplasia. Pre-malignant state of CA cervix. So CIN when? इसमें भी grading है 1, 2, 3 and CIS. So CIN1, what is the management? इसमें कैसे manage करेंगे? Observation for 2 years. Observation for 2 years. If still persist, then ablative cryotherapy. Ablative cryotherapy. In case of CIN2 and 3, यहाँ पे treatment होगा LEEP and LITS. LEEP mean loop electro excisional procedure and the LITS means large loop excisional transformation zone. So treatment in case of CIN1 and 2 and 3. Okay. So what is the meaning of conization? Conization is called as cone biopsy. Cone biopsy. इसमें हम सैंपल क्या लेंगे? Endocervix. This one is the endocervix. Ectocervix and transformation zone. एक कोन की तरह इसको हम निकाल लेंगे. So इसको कहते हैं conization and cone biopsy. What are the indications for cone biopsy? कौन कौन से indications हैं जिनमें हमें करना है conization? If the endocervical curettage is positive, if suspecting adenocarcinoma, microinvasion of CA cervix, to treat stage 1A1 of CA cervix. इसमें हम सैंपल में क्या लेंगे? एंडोसर्विक्स, जो एरिया है एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन जोन. इन तीनों को ही एक बार में ही हम निकाल लेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें HPV वैक्सीनेशन. 3 तरह की वैक्सीनेशन है. फर्स्ट वन इज सर्वारिक्स. सर्वारिक्स इज बाइवेलेंट against HPV 16 and 18. Gardasil quadrivalent for against HPV 6, 11, 16 and 18. And Gardasil 9 nonavalent HPV 6,
11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, and 58. Recommended age 9 to 20 years. 1 or 2 doses intramuscular. More than 21 years, 2 doses at 6 months interval. Okay, this is all about HPV vaccination. Next important है treatment of CA cervix. Treatment of CA cervix. So surgery can be done in early stages till stage 2A1. Means अगर तो size of the tumor है less than 4 centimeter, then we can do surgery. If the size of the tumor is more than 4 centimeter, तो यहाँ पे हम सर्जरी नहीं करेंगे. यहाँ पे हम करेंगे कीमो रेडिएशन. कीमो रेडिएशन. Before radiotherapy, cisplatin is given as a radiation sensitizer. Radiation sensitizer. So ovaries are preserved in young females in case of CA cervix. So clear surgery till stage 2A1. Tumor size less than 4 centimeter. जैसे ही ट्यूमर साइज इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम सर्जरी नहीं करेंगे. यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा? कीमो रेडिएशन. कीमो रेडिएशन इन केस ऑफ 1B3, 2A2, 2B एंड बियॉन्ड. बिफोर रेडियोथेरेपी मैंने आपको बताया सिस्प्लेटिन इज गिवन एक्ट एज ए रेडिएशन सेंसिटाइजर. रेडिएशन सेंसिटाइजर. तो सीए सर्विक्स में इतना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया इन फीमेल्स एंड मेल्स. सो टिल 8 weeks of pregnancy, 2 pair of ducts are present. 2 pairs of ducts are present. First one is Wolffian duct, also known as mesonephric duct. Second one, Mullerian duct, also known as paramesonephric duct. In case of males, testis में two types of cells, Sertoli cells and Leydig cells. Sertoli cells and Leydig cells. सर्टेली सेल्स क्या रिलीज करेंगे? एंटी मुलेरियन हार्मोन. एंटी मुलेरियन हार्मोन से क्या होगा? रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट. रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट. रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट. लीडिक सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे? टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ Wolffian duct, and testosterone will converted into dehydrotestosterone in the presence of enzyme 5-alpha reductase. So Wolffian duct is responsible for development of internal genitalia in males. Internal genitalia in males. तो ये हुआ मेल्स में इंटरनल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन. इन फीमेल्स नो सर्टेली सेल्स, नो लीडिक सेल्स, मीन्स नो एंटी मुलेरियन हार्मोन, नो टेस्टोस्टेरोन. सो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन नहीं होगा. सो मुलेरियन डक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल female genitalia. Internal female genitalia. So Mullerian duct से फॉर्मेशन होगा fallopian tubes, uterus, cervix, upper 1/3 of vagina.
upper 1/3 of vagina. Lower 2/3 of vagina is formed by urogenital, sinus, and ovaries are formed by genital ridge. Genital ridge. Genital ridge. So, Mullerian ducts are responsible for formation of fallopian tubes, uterus, cervix, and upper 1/3 of vagina. So, male and female internal genitalia can be differentiated by 10 weeks. Means 10 weeks तक formation हो जाता है, या तो वो male genitalia है या फिर female genitalia. So, hormone dihydrotestosterone is responsible for external appearance of male genitalia. Male genitalia. Means अगर तो DHT present है, it means formation of male external genitalia. If this hormone is absent, then formation of female external genitalia. Female androgens are responsible for formation of external genitalia. Partially amount of testosterone leads to ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia. Partial amount of testosterone leads to ambiguous genitalia. Next थोड़ा पढ़ते हैं ambiguous genitalia या फिर congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia. So what is the meaning of ambiguous genitalia? It means when we are not able to tell whether it is a male or female जेनेटेलिया. जब हमें कंफर्म ही नहीं होगा कि जो जेनेटेलिया है आफ्टर जब बेबी बॉर्न होता है कि मेल जेनेटेलिया है या फिर फीमेल जेनेटेलिया है, इसको हम कहते हैं एम्बिगुअस जेनेटेलिया. सो दिस वन इज फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एंड ये है मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. जो बीच में इंटरमीडिएट रह जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia. Clear? So ambiguous genitalia means clitoral hypertrophy. या तो फीमेल में क्या होगा? क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी. मेल्स में माइक्रो पेनिस, समटाइम्स हाइपोस्पेडियस या फिर स्क्रोटम बाइफिड या फिर स्क्रोटम बाइफिड. ओके, सो फीमेल में कॉज क्या हो सकता है एम्बिगुअस जेनेटेलिया का? फीमेल्स में कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनेटेलिया. यस, एनीवन? कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनेटेलिया इन फीमेल. yes Dr. Bhuvana, too much androgens. Too much androgens. Or in male fetus, too little androgens. Means females में androgens का ज्यादा होना और males में androgens का कम होना. ये है cause of ambiguous genitalia. So what is the meaning of true hermaphroditism? True hermaphroditism. Bilateral ovotestis. Presence of bilateral ovotestis means one side है ovotestis and other side ovary या फिर testis. Ovary या फिर testis. So most common karyotype is 46XX and cause of
ambiguous genitalia. Clear? So what is the meaning of pseudo-hermaphroditism? It means gonads are of one sex and phenotype of other sex. Phenotype of other sex. Female hyperhermaphroditism means gonads are ovaries, external genitalia है male. Means कोई भी female है. Gonads are ovaries, but phenotypically वो कैसी है? Male जैसी. Most common cause is congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia in case of females. And males में तो gonads are testes. तो gonads are testes. External genitalia, female. And most common cause, AIS, androgen insensitivity syndrome. Means females में most common cause is CAH, congenital adrenal hyperplasia. In case of males, AIS, androgen insensitivity syndrome. And most common enzyme deficiency, इस पे क्वेश्चन आते हैं कई बार. Most common enzyme deficiency, 21 alpha hydroxylase and 11 beta hydroxylase. Okay, so most common deficiency in case of CAH. Next पढ़ते हैं genital tuberculosis. Genital tuberculosis. So genital tuberculosis is the most common cause of infertility. Infertility in our country. In India, most common cause of infertility. Most common primary site is lungs. प्राइमरी साइट इसमें लंग्स ही होंगे. देन लिम्फ नोड्स. हिमेटोजेनिक स्प्रेड से ये आ जाएगा जेनाइटल ऑर्गन्स. सो दिस वन इज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन. सेकेंडरी इन्फेक्शन. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, yes, fallopian tubes. Fallopian tubes. Fallopian tubes. 90% cases में. Ampulla of fallopian tubes. And second most common site of genital tuberculosis? Second most common site of genital tuberculosis. Yes, anyone? Second most common site. Endometrium. Endometrium. Second most common site of tuberculosis. Clinical presentation. सबसे ज्यादा डैमेज किसका होगा? fallopian tubes का in case of genital tuberculosis. Damage of tubal mucosa, endosalpingitis, bilateral tubal blockage. Most common cause of bilateral tubal blockage is genital tuberculosis. Hydrosalpinx and tubo-ovarian mass. Tubo-ovarian mass. So fallopian tubes में हमें क्या मिलेगा? In case of genital tuberculosis, damage of tubal mucosa, blockage of tubes, hydrosalpinx and tubo-ovarian mass. So in case of genital TB, hysterosalpingography is contraindicated. Is contraindicated. बिल्कुल नहीं करेंगे HSG. ओके, बट अगर किसी पेशेंट में होती है तो हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आएंगी? So these are some important images. First one is hydrosalpinx. Hydrosalpinx. Hydrosalpinx means fluid-filled fallopian tubes. Fluid-filled fallopian tubes. First finding. Second one, beaded appearance of tubes. Tubes की appearance कैसे होगी? Beads. जैसे beads होंगे इस तरह से. Beaded appearance of tubes. Third one, golf stick appearance.
gall stick appearance, like this, gall stick appearance. Third one, tobacco pouch appearance, tobacco pouch appearance. And the last one, lid pipe appearance, बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा, बारीक सा फेलोपियन ट्यूब, lid pipe appearance. So please आप ये याद रखना, hydrosalpinx, beaded appearance of the tubes, tobacco pouch appearance, gall stick appearance, and lid pipe appearance is seen in case of genital tuberculosis. और एंडोमेट्रियल टीबी में क्या फाइंडिंग्स आएंगी? एशरमैन सिंड्रोम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस क्या हो जाएगी? एक दूसरे से, दोनों से क्या होंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगी, जिससे क्या होगा? यूट्राइन, जिसे हम कहते हैं यूट्राइन सेनिकी. सो आइडेंटिफाई द इमेज, ये बताइए क्या है? यस, एनीवन? एचएसजी फाइंडिंग्स. यस, बायलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, यहाँ दोनों साइड से कॉर्नुअल ब्लॉकेज है. कौन सा कैनुला यूज करेंगे यहाँ पे हम? लीच विकल्सन कैनुला. कौन सी डाई यूज करेंगे यहाँ पे हम? मिथिलिन ब्लू. सो दिस वन इज बायलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, bilateral cornual block. Most common cause, yes Dr. Bhuwana, most common cause is physiological, physiological या फिर spasm. जैसे ही डाई इंसर्ट करेंगे कई बार स्पाज्म हो जाता है, जिससे कॉर्नुअल ब्लॉकेज हो जाता है. एंड मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज इज जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस. सो व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इन केस ऑफ बायलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉकेज? नेक्स्ट स्टेप, next step in case of bilateral cornual blockage. Yes, laparoscopy plus hysteroscopy, laparoscopy plus hysteroscopy. ओके, ये चेक करने के लिए कि रियल ब्लॉक है या फिर कॉर्नुअल ब्लॉकेज है. इफ द ब्लॉकेज परसिस्ट, अगर यहाँ पे भी हमारी फाइंडिंग्स में आता है ब्लॉकेज, देन नेक्स्ट स्टेप IVF. यस, IVF. Next step will be IVF. So diagnosis, what is the diagnosis? HSG findings, right hydrosalpinx and left hydrosalpinx, means दोनों ही ट्यूब्स में है यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स. ड्यू टू bilateral distal block, distal blockage, distal blockage. This is a case of bilateral hydrosalpinx, hydrosalpinx. So next step will be laparoscopic chromoperturbation, laparoscopic chromoperturbation. मैनेजमेंट होगा salpingectomy before IVF. If female wants to conceive, IVF करना है पेशेंट का, then first we have to remove the tubes, salpingectomy, bilateral salpingectomy, because this fluid is फिटोटॉक्सिक. जो भी इसमें फ्लूइड होगा ये होगा फिटोटॉक्सिक. तो ट्यूब्स को निकाल देंगे, देन इसके बाद स्टार्ट करेंगे IVF साइकिल्स, IVF साइकिल्स.
So next important point is management in case of uterine prolapse. So most common cause of uterine prolapse, weakness of muscles and ligaments, pelvic muscles and ligaments. Most commonly seen in postmenopausal females. So what is the management of uterine prolapse in case of female age more than 40 years and family is completed? आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखने हैं सर्जरीज के. ओके, so female age more than 40 years and family is completed. Yes, anyone? Management in case of, yes, Dr. Bhuvana, Fothergill repair. Treatment is Fothergill's repair. इसको मैनचेस्टर रिपेयर भी कहते हैं. एम्पुटेशन ऑफ द cervix. Amputation of the cervix. So in case of nulliparous female, where the fertility is concerned, then nulliparous female, fertility is concerned. Sling surgeries. Sling surgeries. यहाँ पे हम फॉदरगिल रिपेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी इन केस ऑफ सर्वाइकल एम्पुटेशन, सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल डिस्टोशिया, रिकरेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस. सो नल्लीपेरस में हम करेंगे abdominal sling surgeries. So in case of menopausal female with third degree uterine prolapse, menopausal female with third degree uterine prolapse, name of the surgery, menopausal female with third degree uterine prolapse, vaginal hysterectomy, vaginal hysterectomy, vaginal hysterectomy. So menopausal female age 60 to 65 years with hypertension and diabetes, then Leaford colpoglycis. Leaford colpoglycis. So in case of elderly female age more than 65 years, elderly female age more than 65 years, ring pessary. Ring pessary. Clear? In case of uterine prolapse, if the age of the female is more than 40 years, fertility is not concerned, then Fothergill repairs. Fothergill में करते क्या है हम? Cervical amputation. Nulliparous female में where fertility is concerned, sling surgery. Menopausal female with third degree uterine prolapse, vaginal hysterectomy. Menopausal female 60 to 65 years with hypertension, diabetic या फिर कोई भी medical problem है, then Leaford colpoglycis. In case of elderly female age more than 65 years, ring pessary. Ring pessary. So management of vaginal prolapse. What is the management of vaginal prolapse? Vaginal prolapse में या तो anterior wall prolapse होगा या फिर posterior wall prolapse. So in case of anterior wall prolapse, cystocele and urethrocoele. In case of posterior, rectocele and enterocele. So treatment in case of cystocele and urethrocoele. Yes, anyone? Cystocele and urethrocoele. Anterior
colpo anterior colporrhaphy, anterior wall repair, anterior colporrhaphy. So in case of rectocele, posterior wall में, in case of rectocele, posterior colpo perinorrhaphy. Okay, in case of enterocele, surgery in case of enterocele is McCullough-Caldoplasty. Yes, McCullough-Caldoplasty. In case of wall prolapse, हमने सर्जरी कर दी, स्ट्रेक्टमी कर दी है पेशेंट की, लेकिन वॉल्ट, अब जो वॉल्ट रह गया विजाइना को, उसमें प्रोलैप्स हो गया है. सो इन केस ऑफ वॉल्ट प्रोलैप्स, यूट्रोसेक्रल सस्पेंशन या फिर सेक्रोस्पाइनल फिक्सेशन. So in case of cystocele, urethrocoele, anterior wall prolapse, vaginal prolapse, anterior colporrhaphy. In case of rectocele, posterior colpoperinorrhaphy. Enterocele में McCullough-Caldoplasty. Wall prolapse में uterosacral suspension and sacrospinous fixation. So यहाँ पे जो यूट्रस है, जो विजाइना है, वॉल्ट विजाइना को, यहाँ पे कहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे? सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट के साथ. So in case of McCullough-Plasty, this one is a vaginal vault, को फिक्स करेंगे हम यूरेट्रोसेक्रल लिगामेंट के साथ. यहाँ पे टाई कर देंगे. This is called as McCullough-Caldoplasty. So next है Mullerian abnormalities. इस पे हर बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है Mullerian abnormalities पे. So normally, जैसे मैंने आपको बताया, 2 Mullerian ducts are present. दोनों ही आपस में फ्यूज करेंगी फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड्स. देन फॉर्मेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स. सो एबनॉर्मल क्या हुआ? इफ द बोथ डक्ट्स आर एब्सेंट, दिस इज कॉल्ड एज Mullerian agenesis. Absence of Mullerian ducts. MRKH syndrome associated with renal and skeletal anomalies. So fallopian tubes, uterus, cervix and upper 2/3 of vagina क्या होंगे? Absent in case of Mullerian agenesis. Ovaries होंगी present, developed from genital ridge. Lower 1/3 of the vagina present होगा. ये कहां से develop होगा? Urogenital sinus. So first abnormality is if the both ducts are absent, called as Mullerian agenesis. Second one, if the one Mullerian duct is present and the other is absent, this is called as HSD image, unicornuate uterus. So this one is unicornuate uterus, banana shaped.
तो दिस वन इज ए यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, मतलब एक साइड में ही है यूट्रस, हाफ ऑफ द यूट्रस, हाफ ऑफ द सर्विक्स, हाफ ऑफ द वजाइना एंड वन fallopian tube can lead to ectopic pregnancy and unilateral dysmenorrhea. Ectopic pregnancy and unilateral dysmenorrhea. Complete failure of fusion in entire length. अगर मुलेरियन डक्ट entire length से फ्यूज नहीं होंगी, then this is called as two fallopian tubes, two uterus, two cervix. One vagina is called as bicollis, unicollis, and two vaginas bicollis. So this is called as, इसमें one vagina है, यहाँ पे है two, 1 and 2. Two fallopian tubes, two uterus, two cervix. This is called as didelphic uterus. Didelphic uterus. Fusion begins but doesn't complete. फ्यूजन तो स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया. Fundus is dipping. Shape of the uterus is heart-shaped uterus. Two horns of the uterus, 1 and 2, one cervix, one vagina. So this is called as bicornuate uterus. Bicornuate uterus. तो इस यूट्रस में प्रॉब्लम क्या आएगी? ट्रांसवर्स लाई. Okay. Next one, both Mullerian ducts fuse but septa formed. Mean fundus is not divided. This one is a septa formation हो गया है. Fundus is dome shaped, not divided. When you see inside, जब आप अंदर देखेंगे, then you will see septa. अंदर क्या देखेंगे आप? सेप्टा. दिस इज कॉल्ड एज सेप्टेट यूट्रस. नॉर्मली जो सेप्टा है वो 20 वीक्स तक रिजॉल्व कर जाता है. अगर नहीं होता देन कॉल्ड एज सेप्टेट यूट्रस. सो मोस्ट कॉमन यूट्राइन अनोमली septate uterus, then bicornuate uterus. Septate uterus, then bicornuate uterus. Cause of septate uterus is the most common cause of recurrent abortion. Trimester 2, then trimester 1 and infertility. So दोनों में से septate uterus is the cause of recurrent abortion and infertility. Investigation of choice in Mullerian abnormalities, 3D ultrasound, and gold standard is MRI. So how to differentiate between bicornuate uterus and septate uterus? Distance between two cornua, more than 4 centimeter in bicornuate uterus, less than 4 centimeter in septate uterus. Angle more than 90 degree. More than 90 degree or angle less than 90 degree. More than 90 degree angle and distance between the cornua is more than 4 centimeter. And in this case of septate uterus, distance less than 4 centimeter and angle
less than 90 degree, acute angle. Or in case of bicornuate uterus, angle more than 90 degree, obtuse angle. Treatment in case of bicornuate uterus, Strassman metroplasty, or in case of septate uterus, hysteroscopic resection of the septa. Hysteroscopic resection of the septa. If unable to diagnose, कई बार हम डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे कि सेप्टेट यूट्रस है या फिर बाइकॉर्नुएट यूट्रस, देन हम फंडस को देखेंगे एंड बिलो एंड अबव. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा लैप्रोस्कोपी प्लस हिस्टेरोस्कोपी इन वन सिटिंग. हिस्टेरोस्कोपी इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में लैप्रोस्कोपी इंसर्ट करेंगे एंड हिस्टेरोस्कोपी. अगर तो सेप्टेट है देन डिसेक्शन ऑफ सेप्टेट सेप्टा. इफ bicornuate uterus, then Strassman metroplasty. So this one is a arcuate uterus. Arcuate uterus means everything is normal, but fundus is not dome shaped. Everything is normal, but fundus is not dome shaped. या तो fundus होगा flat, मतलब dome shape नहीं होगा like this, या फिर होगा छोटा सा dip. This is called as arcuate uterus. Arcuate uterus. Next है contraceptives. Contraceptives. So this one is a two-day sponge, mushroom-shaped barrier method of contraception, which contains 1 gram of डॉक्टर भुवाना, आर्कुएट यूट्रस में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं. It contains today's sponge. It contains non-oxynol 9 spermicidal agent. Once inserted, can be used up to 24 hours. Once inserted, can be used up to 24 hours. So this one is the barrier method. LARC means long-acting reversible contraceptives. Long-acting reversible contraceptives. IUCD, intrauterine contraceptive device. These are called as long-acting reversible contraceptives. So first one is copper T. Copper T. Second one, multi-load. And third one is Mirena. Copper T, multi-load and Mirena. Copper containing device, and this one is the hormonal contraceptive. Hormonal contraceptive. So in copper T, copper wire is attached, included in National Family Planning Program by Government of India by the name of Paraguard. So multi-load is not T-shaped. Expulsion rate is low. Never inhibit ovulation. Copper T containing devices never inhibit ovulation, but Mirena, which is also called as LNG20, means levonorgestrel. Levonorgestrel. It contains levonorgestrel. Total amount 52 milligrams and release करता है 20 microgram per day levonorgestrel, जिससे क्या होगा endometrial atrophy. Endometrial atrophy. Duration copper T का 10 years, multi-load 5 years, Mirena 5 to 7 years. Mirena 5 to 7 years.
And what are the non-contraceptive benefits of Mirena? In case of excessive bleeding किसी फीमेल को क्यों होगा? Because of excessive estrogen. So menorrhagia, to treat menorrhagia. In case of fibroids, endometriosis, adenomyosis, we can use Mirena IUCD. और इसका और क्या इफेक्ट रहता है? नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कम करता है पीआईडी को, कम करेगा, ओके, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को कम करेगा. क्यों कम करेगा? बिकॉज सर्विक्स म्यूकस हो जाएगा थिक प्रोजेस्टेरॉन से, जिससे इंफेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम. नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ Mirena. So next है प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव. प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनमें आते हैं मिनी पिल्स, implants and injections. Mini pills available in India is Cerazette. Only one available. It contains desogestrel progesterone, 21 tablets, 1 tablet per day. Only one mini pill is available. So next one, injection DMPA, depot medroxyprogesterone acetate, included in National Family Planning Program by the name of Andhra. Thank you, Dr. Bhuvana and Dr. Strange. So DMP contains 150 milligram of progesterone given once in 3 months intramuscular. तो इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है? डिले रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी आफ्टर 1 year. डिले रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी. So ये तो हुआ इंजेक्शन DMPA. And the next one is Implanon. Implanon is a single rod 4 centimeters inserted. कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? Subcutaneously into medial side of left arm. लेफ्ट आर्म के मीडियल साइड पे इंसर्ट करेंगे. इट कंटेन्स etonorgestrel. Rate of release 60 microgram per day. Total 68 milligrams. It contains 68 milligrams of etonorgestrel. Rate of release is 60 microgram per day. And the lifespan is 3 years. Most effective. अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आंसर क्या होगा? इम्प्लेनॉन. 0.05% फेलियर रेट. 0.05% फेलियर रेट. Centroman included in National Family Program by the Government of India by the name of Chaya. इसमें क्या रहता है? Ormiloxifene non-steroidal. This one is a non-steroidal. So progesterone only contraceptive में आपने याद रखना है मिनी पिल्स में Cerazette, injection DMPA, depot medroxyprogesterone acetate, and third one is Implanon. It contains etonorgestrel 68 milligrams.
नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ओसीपीज एंड कैंसर्स। ओसीपीज से कौन से कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है और कौन से कैंसर्स का रिस्क कम होता है? सो रिस्क बढ़ेगा सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमा। अगर ओसीपीज को ज्यादा यूज करते हैं देन सर्वाइकल एडिनोकार्सिनोमास एंड हिपैटिक एडिनोमा, बिनाइन हिपैटिक एडिनोमा। और कौन से कार्सिनोमोस कार्सिनोमास का रिस्क कम होता है? सीए एंडोमेट्रियम, सीए ओवरी एंड सीए कोलोन। सीए एंडोमेट्रियम, सीए ओवरी एंड सीए कोलोन। सो नेक्स्ट है परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, e-sure device. So this one is new device, e-sure device. Spring coil like device. ये कैसा होता है? स्प्रिंग की तरह, like this. Spring coil like device. Hysteroscopic insertion in the interstitial part of the fallopian tube. So this one is the interstitial part of the fallopian tube. यहाँ पे इसको स्टेरोस्कोपिली इंसर्ट किया। यस डॉक्टर भवाना, ओसीपीज एचआरटी सेम है। ओके, सो एचआरटी से भी इन कैंसर्स का ये कैंसर इंक्रीज होंगे, ब्रेस्ट ओवेरियन एंडोमेट्रियल, यस, ऑल विल इंक्रीज, यस। सो ईशो डिवाइस एक्ट्स लाइक ए फॉरेन बॉडी। जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया इट विल एक्ट्स लाइक ए फॉरेन बॉडी। इन्फ्लामेशन होगा, एडिशंस होंगी, देन ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब, then blockage of tube. And this spring-like device is made up of nickel and titanium. Nickel and titanium. After 3 months, ऐसा नहीं कि जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो स्टेरिलाइजेशन हो गया। आफ्टर 3 months हमें क्या करना है? HSG, स्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, टू चेक कि ट्यूब्स ब्लॉक हुई हैं या फिर नहीं हुई। Next, emergency contraceptives. Emergency contraceptives, also known as postcoital contraception. Postcoital contraception and contraceptions after unexplained, unprotected intercourse within 72 hours. Contraceptives after unplanned, unprotected intercourse within 72 hours. So, इसमें जो drugs हैं, first one is levonorgestrel. First drug is levonorgestrel. किस नाम से आएगी? LNGE pill. Dose 1 single tablet, 1.5 milligram stat. 1 single tablet, 1.5 milligram stat, या फिर 0.7 milligram morning, then after 12 hours 0.75 milligrams of dose. Most commonly used within 72 hours. Most commonly used within 72 hours. So first drug is levonorgestrel in emergency contraception. Second one, ulipristal. Second one is ulipristal. Dose 30 milligram single dose of 30 milligram. किस नाम से आएगी ये? एला, by the trade name of एला. Most effective. So this one is the most effective hormonal contraceptive till 5 days. Till 5 days. Till 5 days. And third one, IUCD, copper T. कॉपर टी। मेरिना को कभी भी हम एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करना है देन कॉपर टी, इंसर्टेड विद इन 5 days. विद इन 5 days. मोस्ट इफेक्टिव मेथड, अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, देन IUCD, copper T. OCPs. Fourth one, you can give OCPs as an emergency contraception. 2 tablets stat after 12 hours, 2 tablets.
Fifth one, mifepristone. Mifepristone, 10 to 50 milligram single dose. Action is anti-progestin. Anti-progestin. डॉक्टर भुवाना, जो भी ये मैं आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बता रही हूँ, या तो विद इन 72 आवर्स लेने होते हैं या फिर विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज हम यूज करते हैं यूलिप्रिस्टल और आईयूसीडी कॉपर टी। आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेंटक्रोमैन। सेंटक्रोमैन, 2 tablets, 60 milligrams twice, 12 hourly, within 24 hours of intercourse. Within 24 hours of intercourse. सो क्वेश्चन में कई बार क्या आता है कि टिल 5 डेज हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यूलिप्रिस्टल या फिर आईयूसीडी कॉपर टी। बाकी सभी का यूज करेंगे विद इन 72 आवर्स, सेंटक्रोमैन का विद इन 24 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। ड्रग्स नॉट यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सी ड्रग्स हैं जिनको हम एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज मेरीना, मिजोप्रोस्ट एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। Okay, Marina, Misoprost, and progesterone only pills. So this is all about emergency contraception. So last topic, just about vaginal discharge, cervical discharge and PID. इनमें हमें कौन कौन सा किट यूज करना है by syndromic management. So first one is gray kit. First one is gray kit. Kit number 1. ग्रे किट हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सर्वाइकल डिस्चार्ज। सर्वाइकल डिस्चार्ज, इसको यूज करने से पहले हम पर स्कैपुलम एग्जामिनेशन करेंगे, देन चेक करेंगे किसी तरह का सर्वाइकल इरोजन है या फिर नहीं है, या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है। देन ग्रे किट में क्या होगा, टैबलेट सिफिक्सिम 400 मिलीग्राम ओडी स्टैट, ओके, and azithromycin 1 gram OD stat. Gray kit for cervical discharge, tablet cefixime 400 milligram OD, then tablet azithromycin 1 gram OD stat. Green kit. Green kit, kit number 2 is for vaginal discharge. This one is for vaginal discharge. इसमें क्या रहता है, फ्लुकोनाजोल 150 मिलीग्राम एंड secnidazole 2 grams. Secnidazole 2 grams. And third one, kit number 6, yellow kit. Yellow kit हम यूज करते हैं in case of PID, pelvic inflammatory disease. अगर पेशेंट आता है with complaint of grey girl wearing beautiful red yellow bangles. गुड डॉक्टर बुहाना, अच्छा है, निमोनिक से आप इजिली याद कर सकते हैं हर चीज को। सो येलो किट, किट नंबर 6 हम यूज करेंगे पीआईडी में, अगर पेशेंट आता है विद कंप्लेंट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड डिस्चार्ज। तो इट कंटेन्स डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 डेज हमें लेना है, मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम फॉर 14 डेज एंड सिफिक्सिम 400 मिलीग्राम ओडी स्टैट डोज। ओके, सो gray kit, kit number 1 for cervical discharge, green kit, kit number 2 for vaginal discharge, and yellow kit, kit number 6 for PID. 6 for PID. So I think this is all about
फॉर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं हमारे। सो आप एक बार फिर से रिवाइज करना क्विकली सभी को, साइंस, सिम्टम्स, एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिए आप सब। ओके देन, टेक केयर, गुड नाइट।